And now I am going to discuss one very interesting force, that is pseudo force. And pseudo force is not a real force, but this force is actually one type of fictitious force, will depend on the nature of observer. And this is one type of trick, because Newton's law is mainly valid for the inertial frame. So when you are in the non-inertial frame, then Newton's law is not valid. So what we have done, we have make a trick such that we can use this trick even in the non-inertial frame also, by the using fictitious force, by the using pseudo force. Okay, so what is this particular thing? Let me explain you in a very nice way. Okay, so suppose we have any mass, and there is an observer, and suppose this observer is moving with constant velocity v. Then what will happen to this mass? From with respect to this observer, this mass will appear to move into this direction with same velocity v. Okay, with same velocity v. So what will be acceleration on this particular mass? Batao, acceleration is equal to what? 0. 0. Because this force, this velocity is constant in nature. Now let us see the whole thing from different observer perspective. Okay, what we have a different observer, and this observer is moving with acceleration a0 towards left. Then what will happen to this mass with respect to, suppose this observer is Mr. A and this observer is Mr. B, then what will happen to this mass with respect to Mr. B? It will appear to move towards left with what acceleration? A0. 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 Here your A is equal to A0, because it is appear to move with velocity, sorry, with acceleration A0. Now the thing is very interesting. You have acceleration, you have effect, but what is the cause of this particular effect? Are you getting my point? क्या cause है कि ये आपका accelerated हो रहा है और acceleration without force? How it can be possible? So here what we have some confusion, and actually this observer has some acceleration. So if it has some acceleration, what will happen to this mass? This mass is basically have also some acceleration without any external force. If someone will ask you who is pulling this particular mass towards left or who is pushing this particular mass towards left, you should have some external force, then only you can have m into a0, because you have effect when you have some cause, because without cause there is not any effect. So here we have we have defined a new type of forces, and that force is basically pseudo force. That type of force is basically what? Pseudo force. So what is this pseudo force? So what we have assumed, we assume if some observer, if any observer have acceleration a0, and it is at the non-inertial frame, then this observer will see on this mass a pseudo force. And what is this pseudo force? F pseudo is equal to mass of a object into acceleration of observer, and the direction is opposite to the observer. So what is pseudo force? Pseudo force is nothing, mass of particle or block into acceleration of observer. And what is direction of pseudo force? The direction of pseudo force
direction of pseudo force is opposite to direction of observer. So what do you have? You have a fictitious force, which is not a real force, and that is equal to your m into a naught. So this force is equivalent to what? ये force कितना है? This is your effect. And what is this force? This force is also m into a naught is equal to m into a naught. So what you have justify your acceleration of the particle due to acceleration of this particular observer. So you are just assuming that some pseudo force, some fictitious force is either pulling or pushing the particle in a opposite direction of observer with same acceleration of the observer. And obviously mass into acceleration is that particular pseudo force. So this is very interesting force, and it will make your life very easy when you have some kind of situation where the observer has some acceleration. Okay, then you can use this type of forces very easily, and then you can easily solve the problem. Everyone is comfortable? Hello, sir. Am I audible? Yes. Sir, does it pseudo force become negative? सर यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं दिया है? नहीं नेगेटिव क्यों लिखूंगा? Because observer is in direction a naught. हाँ. So the direction of mass moving will be in the opposite to the observer acceleration. So yes. So that will be that will be not a negative mass. What? Listen, positive and negative will depend on what you are taking. Okay. You can, if you are assuming that this is your positive direction, then this will be your negative direction. That will become when you are assuming some positive direction. Are you getting this thing or not? Okay, sir. So we will be taking. When we will solve the problem, then we will see whether it is positive or negative. Are you getting my point? Yes, got it, sir. Because here I am not deciding this is my positive and this is my negative. Okay. Okay, sir. You are 100% correct. If I am assuming this is positive, then this will be negative. But here I am just talking about the magnitude, and here I have directly written it that it is in the negative direction of observer. Okay. Okay, sir. Thank you. So that is not, suppose I will just tell you that this is going into this direction, then your thing is correct. Now it's okay. Yeah, okay, sir. Got it. We will be deciding the direction based on. Yes, first you have to start the solving problem, and then you will talk about the direction. Are you getting my point? Yes, sir. Got it. Right now you have to just only, because we are just discussing each and every forces separately. Okay, sir. Okay. So now next I will discuss how we will draw the FBD, and where we will take what is positive, what is negative, and how we will discuss all this thing. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. So let's try to go for and how you will solve the Newton's law. You will solve the Newton's law by different method, and one of the very famous method is that free body diagram. So let's try to go for what is free body diagram, and it is very useful, and it is very smart actually. And once you will solve it, you will, and this is all about the practice. You will practice as much as different questions, you will able to solve the problem. Okay. So let's try to go for a so how you will go for free body diagram, FBD. Okay. So free body diagram. Actually, this is +2 level thing. Okay. So but yes, there is question in your exam also, so we have to discuss each and everything. So before, how you will go for free body diagram? So there are some assumption. Okay. And on the basis of that assumption, you have to just
draw the free body diagram. First of all, what you have to do, we have to free body diagram means you have to make all the particle free, and then you have to write all the forces on individual particle. So whatever the forces acting on the another particle, nothing to do with the first particle. So first one, we have to draw free body diagram, draw FBD independently. For each block or particle, each particle in a system. Okay. What is meaning of that? Suppose I am taking one basic condition. Suppose this is one of the simplest question. Okay. And suppose this angle is theta. This is M1. This is M2. Suppose this is one of the simple system you have, mass and pulley system. And this angle is constant, that is theta, and leave the friction and each and everything right now. So what you will do? You will draw there are two masses, so you will draw the free body diagram for this mass separately. You will draw the free body diagram for this mass separately. Okay. And when you are talking independently, you can independently choose their axis also. So second thing, you can independently choose it is not necessary that you will choose this as your x-axis, this is your y-axis. Because if you will choose this type of axis, then it will be very complicated. You can choose it, but then you have to be very, very smart. And it is very difficult to apply this type of axis on each and everything. So what you will do, you will choose the axis according to your convenience. Okay. So hence you have independently write this independent, you will keep independent to this particle, you will keep independent to this particle, then you have to independently choose axis. And in general, the line of motion is x-axis and perpendicular to surface is y-axis. And perpendicular to surface is y-axis. What is the meaning of that? Suppose I am talking about the first particle. So what I will choose this as my x-axis, because suppose this M1 is going downward. So I am choosing this as my x-axis, and the perpendicular of this surface is my y-axis. This is my x-axis and this is my y-axis. Are you getting my point? Yes? Yes. And the same time, for the second particle, I will choose for the second particle, hence it is going downward. I assume that it is going downward. It will go upward. So I will choose this is my x-axis and this will be my y-axis. Are you getting my point? For the particle 2. This is for M1 and this is for M2. They are independent, don't worry. You cannot say, sir, yahan par x-axis hai yahan. What we are choosing axis arbitrarily, but we are resolving the forces. So this is the trick. In general, the fundamentals tell you that choose the axis horizontally and vertically and resolve all the thing like that. But that will be very difficult. So why this is used, okay?
So second thing, and it is very important. Okay, so for this particle, this is my x-axis, and for M2, this is my x-axis, and this is my y-axis. Everyone is comfortable? सर हम्म। सर अगर हमें इन दोनों का जो मोशन है अगर सर वो रिलेट करना हो तो फिर हम कैसे चेक करेंगे सर? अभी आ रहा हूं तीसरे बात पर, ठीक है? ओके ओके एंड देयर इज द थर्ड थिंग, you will just draw all forces. You will draw all forces, mainly three type of force. क्या क्या होगा? Pull, Push and friction. push, ग्रेविटेशन सर friction, and if needed, Gravitational force. okay, yes, gravitation is also gravitation. Okay, gravitation किस डायरेक्शन में होगा? Always in vertical Downward. direction, vertical downward. इसका डायरेक्शन, so इसी कारण मैंने कहा था कि उसे y एक्सिस मत ले जाना. Okay, this will be your g, this will be your g. Okay, push, pull, friction, gravitation, and if needed, then you can use also pseudo force also. सपोज ऐसा हो कि ये पूरा का पूरा वेज मूव कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं? ये नीचे जा रहा हो और इसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, एंड दिस वेज कैन मूव, देन व्हाट विल हैपन? Meaning of taking axis like that, your observer is sitting here. Are you getting my point? Yes, sir. Then suppose this particular capital mass is moving towards left or right, then what will happen? This observer will also move towards left and right with some acceleration. If this type of case will come into picture, that is different thing. मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो आप लिख रहे हो, ये कैसे लिख रहे हो? You are standing at here, and then you are watching this is moving in x direction. Are you getting my point? Yes. Okay. So, आप x axis पर ही तो खड़े रहोगे, है ना? Okay. Now suppose capital M move कर रहा हो, ये जो वेज है ये move कर रहा हो right की तरफ with some acceleration. Then this observer will Also at the inertial frame or non-inertial frame? non-inertial. Non-inertial frame. Then hence this observer will at the non-inertial frame. Due to acceleration of this observer, there is some acceleration on this particular particle also. Are you people happy? Yes, sir. So you can make this type of trick if your surface is also moving with some acceleration. जहां पर सारी चीजें, suppose ये केस है, या फिर एक हम प्रॉब्लम भी करेंगे. Suppose यहां पर है एक मास है और दूसरा मास कुछ ऐसे है, और ये पूरा का पूरा कैपिटल M मूव कर रहा है. Are you getting my point? Then obviously we are sitting here, we will see that there is pseudo force on this, there is pseudo force on this. Are you getting my point? Yes, sir. So that will depend on case to case. Okay, so you will draw the different forces. Draw करने का different forces का क्या मतलब है? आप जो भी possible forces है, suppose this is your weight m1g, this is your weight m2g. सबसे पहले तो weight ही लिखोगे. Okay, अब ये weight इसको नीचे खींच रहा है, तो obviously there will be some normal force, है ना? Are you getting my point or not? Obviously ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहां पर एक स्ट्रिंग है, तो there will be some tension. So tension will always have pulling effect. वो किधर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं होता है. इसके लिए भी आप देख सकते हो, there is some tension here. Okay, so this kind of thing will be there, और आप decide करोगे कहां pushing है कहां pulling है. Look at, here is normal, so this is a pushing effect. Here is tension, so this will be pulling effect. So you will draw all the forces according to their nature, nothing to do with the x and y axis. Are you getting my point? Yes. According to their nature आपको उसे draw करना है. And next, fourth, resolve the forces
along x एक्सिस, और जो भी आपका x एक्सिस है, इसको है तो इसको x एक्सिस और इसे y एक्सिस, along x एक्सिस and y एक्सिस, x axis and y axis. And once you will resolve the forces, you can easily write summation over fx is equal to individual particle के लिए, so m1 a1x, okay, summation over fy, अगर कोई ऊपर भी उठ रहा हो तो आप इसको लिख सकते हो m1 a1y, this is for the first particle, so x1 लिख दे रहा हूं, y1 लिख रहा है, and you have theoretically बट सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपकी काम की चीज है वही लिखोगे, है ना? So you will just go for summation over x2 for m2 a2x and summation over fy2 is m2 a2y. हो सकता है किसी की जरूरत नहीं हो, किसी की जरूरत हो, but theoretically you will write this thing. Now the next question is very interesting, जो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हाउ डू, नाउ यहां पर आपको ये चेक करना होगा, यू हैव टू चेक दैट नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, है ना? तभी तो चीजों को आप कंप्लीटली और यूनिकली सॉल्व कर पाओगे. Are you getting my point? Number of equation must be equal to number of unknown variable. Then only you can solve the problem uniquely. लेकिन आप देखोगे कि सिर्फ न्यूटन्स लॉ को लिखने से आपका ऐसा नहीं हो पा रहा है, इक्वेशन कम हो रहा है, वेरिएबल ज्यादा हो रहा है. Then you will use equation of constraint. So what will be last part? Write equation of constraint. What is equation of constraint? That will tell you the variable of m1, how your variable of m1, and that is the dynamical variable जो change हो रहा है, means how your velocity of m1 is related to m2, how your acceleration of m1 is related to m2, how your position of m1 is related to m2. और ये क्यों related है? Because you know that this length of string is what? Always constant. If it will move x direction, x distance, then it will also move x distance. So why you can say the acceleration of the magnitude of acceleration is same for both the particle. Isn't it? And unless until, and sometime it is very genuine, it is very trivial that there is no need to write this thing, but sometime you need to write this thing properly when you have one or more pulley and this kind of thing, then you have to write it properly. Otherwise, it is very trivial at your level. Okay. We will also try to solve some problem based on that also. Everyone is comfortable? Yes, sir. Sir, Hmm. sir, this choosing of axis is like we used to choose according to the problem. According to problem, Okay. according to motion of a We particle. used to Okay. choose. Because Okay. you So then started we with the, will easily sorry? able to solve it Yes, sorry. because to easily solve the problem. Yes, for easily like, solving the we have to problem. choose the axis. Yes, it is. This free Oh. body diagram is not a Okay, sir. basically any natural law or any natural physics. This is with the help, this is basically from experience of our ancestor. Okay. They have Okay, given us the sir. method. Okay, just solve it. And mainly engineering people. Okay. Okay, sir. समझ रहे हो? Okay, sir. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं और वहां से हमें वहां पर बेसिक थ्योरी को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्योरी को समझ करके हमने मैकेनिक्स में इसे यूज करते हैं. बिकॉज अदरवाइज न्यूटन्स लॉ इज व्हाट? F is equal to ma. That's it. Physics is over. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir.
So we cannot derive all this thing. Are you getting my point or not? The Yes, good sir. thing is that when we are using this methodology or using this assumption, we are getting the correct result. Okay. So we are not discussing any physics. What I am discussing, I am discussing actually method to solve a problem. Okay. Yes, sir. जैसे फेज कर्व का क्लास आप लोगों ने किया है किसी ने? आपने किया होगा, जस्ट इससे पहले फेज कर्व की क्लास हमने Yes, किया sir. था. सो व्हेन यू हैव गो फॉर फेज कर्व, सो फेज कर्व के लिए px को वर्टिकली लेकर के जाते, कोई फिजिक्स थोड़ी है. वी आर यूजिंग सम मेथड. आर यू गेटिंग माय Animation. पॉइंट? Yes. तो उसी तरह से ये Yes, एक sir. मेथोडोलॉजी है. ओके Yes, sir. ओके. सर हाँ बताओ. सर वो जो ब्लैंक है उसमें आपने कहा कि वो मूव करेगा तो सूडो फोर्स लगेगा, तो वो जो आदमी जो होगा उस ब्लैंक पे उसको ए एक्सेलरेशन दिखेगा. वो खुद ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना. ओ, भाई ये सारा कौन लिख रहा है? कोई तो लिख रहा है ना. हाँ. ये सारा कौन लिख रहा है? कोई मैं नहीं लिख रहा हूं. एक वैसा आदमी जो यहां बैठा हुआ है वो लिख रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर उसको वो भी मूव करेगा तो उसको भी एक्सेलरेशन तो नहीं दिखाई देगा ना, अगर वो वेज पे बैठा है. अरे भाई ये वेज पर बैठा हुआ है तो तुम नीचे बैठ करके देखोगे ना, ये पूरा वेज जो है वो हाँ, पूरा वेज बाहर ए वाला. एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर भी क्या होगा? ए एक्सेलेरेशन से मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा. हाँ वो तो है. तो हाँ मतलब बाहर वाला ऑब्जर्वर. ऑब्वियसली ये हम लिख ये रहा है, देख हम रहे हैं सारी चीज को यहां पर बैठ करके. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है, यस. है ना. तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को देखते हो. तो स्यूडो फोर्स एक ट्रिक है, नथिंग बिग डील इन स्यूडो फोर्स, है ना. दैट इज वन टाइप ऑफ ट्रिक. एक तरह का ट्रिक है वो, जिसका कि यूज करके नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं. लिसन, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग ना. आर यू गेटिंग? आप इस चीज को बार बार भूल जाते हो. ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन का मतलब है जुगाड़ देखना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ये चीज को बार बार भूल जाते हो कि हमारा मेन मकसद है अपना काम निकालना, अपना जुगाड़ देखना. सो स्यूडो फोर्स इज वन टाइप ऑफ जुगाड़. ठीक है. Okay. Yes, sir. जब काम नहीं चल रहा है तो कुछ तो करोगे ना, कि ऐसे बैठे रहोगे हाँ कि चलो अब न्यूटन्स लॉ नहीं लगाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं होता है. उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में भी करते हैं. सोरेंजर वेव से, सोरेंजर इक्वेशन से काम नहीं चलता है तो जुगाड़ ढूंढते हैं, अलग अलग टाइप का जुगाड़ देखते हैं, फिर उस चीजों को सॉल्व करते हैं. ठीक है. हर एक चीज फंडामेंटली सॉल्व नहीं हो सकती है, या फिर हमारी उतनी आईक्यू लेवल नहीं होती है कि हम हर एक चीज को फंडामेंटली सॉल्व कर पाए. क्योंकि अगर हर एक चीज को फंडामेंटली सॉल्व कर पाएंगे तो हमारे और गॉड में क्या डिफरेंस रहेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So why we need approximation? So why we need mathematics? So why we need to keep the thing independent, और कुछ चीजों को छोड़ करके आगे काम करते हैं. समझ रहे हो? अब ऐसे तो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो ही नहीं सकता है, तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करो. ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर सम बेसिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो जरा देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. ओके, so I am just giving you 2 and 3 equation of constraint problem, and then we will go for a different type of problems. This is the simplest system known as what? Atwood machine. Okay, and this is your, ये आपके पास लगा हुआ है. So what we have to do? We have to find the acceleration of m1 and m2. That is very simple thing. In general,
How you will solve it? You will just tell this is my M1G. There is a force. This is my M2G. This is your tension T. This is your tension T. Okay. So we can use this particular thing. And let us, so how you will solve it? I don't know which will we go downward, which will we go upward. I don't know. In general, common sense आपको पता चल जाएगा कि M2 बड़ा है तो नीचे जाएगा, M1 बड़ा है तो M1 नीचे जाएगा. But leave it all this thing. So how you will solve it? You will write the equation of motion Equation of for motion. M1. Sorry? सर टेलिंग द सेम, सॉरी. Sorry? क्या हो गया? नहीं सर, वही बोल रही थी इक्वेशन मोशन लिखी. आवाज नहीं क्लियर आ रहा है? वही बोल रही थी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी. हाँ, आप मत बोलो ना, मुझे बोलने दो. ठीक है. So what you will do, you will write the equation of motion. So how I will write the equation of motion? I will write equation of motion like M1G minus T is equal to M1A1. And second equation I will write, because I am not assuming anything. I am not assuming anything. M2G minus T is equal to M2A2. Okay? M1G minus T is equal to M1A1, M2G minus T is equal to M2A2. So how many equation is there? Yeah, clear हो ना आप? Yes, sir. ठीक है. How many equation is there? Two. Two equation. But how many unknown is there? Three. T, A1, A2. So you need one more equation. I am just giving you example of equation of constraint. Okay. Why you need equation of constraint? Otherwise, I know that everybody know that if M1 will move up, then M2 will move down. So the acceleration is in opposite direction. I know each and everything. But how mathematics will tell you this story? Are you getting my point? Sir, Huh. Yes, sir. sir, doesn't T is supposed to be T1, T2? No, because it is the same string. And yes, your question is very genuine. I assume that this disk is massless. Okay. If this disk has some mass and it has some radius, then obviously this is T1 and T2. Then you have to go for torque equation to this also. Okay, sir. Okay. Are you people getting this thing? Yes, sir. Okay. Now I have to establish the relationship, and I know that there is a relationship between M1 and M2. So I have to establish the relationship. The motion of M1 and M2 is not independent, rather they are dependent. So what I have to do, I have to establish the relationship of acceleration between M1 and M2. How I will go for that? I will just go for equation of constraint. I assume, and you can assume this is your x-axis. Sorry, this is your reference level. I can say this is my x1. This is my x2. And I know that this length of rope is constant. Then I can say x1 plus x2 plus pi r. This is your pi r is equal to some length L. And this is your equation of constraint. Very important. This is actually equation of constraint. And if this is your equation of constraint, then you can differentiate all these things twice. You have x1 double dot plus x2 double dot. Hence, this length is constant. That value is 0. And you have x1 double dot is equal to minus x2 double dot. So A1 is equal to minus A2. So mathematically from there, I can assume if A1 is in some positive direction, A2 will be in the negative direction with the same magnitude. Isn't it? So this equation of constraint is very fundamental thing for the mechanics. And now I can convert it. I can assume
A1 is equal to A, then A2 is equal to minus A, and I can put M1G minus T is equal to M1A, and you will write M2G minus T is equal to minus M2A. So in the book, they are writing it directly that T minus M2G is equal to M2A. Okay, आप किसी भी बुक में देखोगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिवियल. सबको पता है कि सबको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. बट सपोज आई डोंट नो एनीथिंग, suppose I don't know anything, how mathematics will tell the story? This is very important. So why we can use this type of constraint. And once you have this type of constraint, you can add it, and what you will get? Your acceleration A is equal to what? दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? M1 minus M2G divided by M1 minus M2 by M1 plus M2 into G. Remember this question, when we will go for a torque equation, then you will find that how moment of inertia will come into picture, and that is one of the favorite question for JAM examination. Okay, we will discuss it later, but right now I am just going for the one-dimensional without using torque type of motion. Everyone is comfortable? I know this is very simple, very trivial, but yes, we have to understand the role of equation of constraint. So on that basis, let us try to go for one particular question. और एक बहुत ही interesting equation of constraint देखते हैं. ठीक है? Okay. Everyone is comfortable? Yes, sir. Yes, sir. Chalo. This is very important. The same Atwood machine is there, and there is a mass M1. There is a mass M2. And let us assume this whole pulley is moving with acceleration A0 with respect to Earth. Okay. The whole pulley is moving with acceleration A0. And now with respect to pulley, this mass will go downward, this mass will go upward, and the whole system is moving up. So it is very complicated, isn't it? ये आपको विजुलाइज नहीं हो पाएगा. ये तो कुछ नहीं है. सपोज करो मैं कुछ इस तरह का प्रॉब्लम दे दूं आपको, जो कि अभी करेंगे भी. सपोज देयर इज वन पुली, देयर इज अनदर पुली, देयर इज अनदर पुली. Suppose this is your two masses. Suppose this is your two masses. Is there? Suppose this is M1. It is M2. It is M3. It is M4. And suppose this is fixed. Can you imagine which will we go up and which will we go down and how this is going to happen? क्या पता चल पाएगा आपको? नहीं सर, वो कॉम्प्लेक्स है. बहुत कॉम्प्लेक्स है. So why equation of constraint is very important. Okay. So let us assume the acceleration of M1 is A1, acceleration of M2 is A2, and this is moving with A0. So I can say this distance, so obviously it cannot be reference. I am choosing this one as a reference. This is your A1. So this will be your X1. This will be your X2. And this will be, let's say, X0. So what will be your equation of constraint? What is your equation of constraint? What is this distance? X0 minus X1 plus what is this distance? Pi r plus what is this distance?
x naught minus x2 is equal to some length L, isn't it? So from there you can just differentiate x naught double dot minus x1 double dot plus x naught double dot minus x2 double dot is equal to 0. And what you have? We have 2 times x naught double dot is equal to x1 double dot plus x2 double dot. So a naught is equal to a1 plus a2 Sorry by to 2. interrupt, sir. Can you please repeat it again? Means what you have written x naught means. Can you please explain once again? X naught minus x1, this distance. Yes, sir. Pi r, this distance. Yes, sir. X naught minus x2, this distance. Okay, sir. Okay. Plus L totally. Thank you, sir. Is equal to L. Okay. So a naught is equal to a1 plus a2 by 2. Isn't it? So this is your acceleration. a1 plus a2 by 2. So now you can use this thing very efficiently. So how you will, now you will write that m1 m1g minus t1 is equal to m1a1, m2g minus t2 is equal to m2a2, and you have this acceleration and you have another equation, and you can replace this a1 and a2 with help of a naught, and you can Sir? solve it. हाँ बताओ. ये केस में पुली को मास होगा या नहीं? पुली का मास हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सर फिर वो टेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा उससे? टी पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसका पुली का मास मास, अरे भाई अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पुली का मास होगा, ये रोटेट कर रहा है, तब तो फर्क पड़ेगा ही टेंशन पर. तब तो फिर टॉर्क इक्वेशन लिखोगे ही. फिर से आपने वही क्वेश्चन कर दिया जो मैंने पिछले बार अवॉइड किया था. सर नहीं, मेरा ये था कि अगर उसका मास है तो फिर अरे दादा आप समझ ही नहीं रहे हो. ये इसका मास है और अगर ये रोटेट कर रहा है तब तो टॉर्क इक्वेशन एक और इक्वेशन लिखेंगे ना. हाँ सर, मेरा वो क्वेश्चन है फिर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए सर. क्यों एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए? मासलेस है ना सर, तो फिर फोर्स तो फिर मतलब कि किसी भी चीज को लेकर कैसे उठा नहीं सकते क्या? और पुलिस पर आगे ऊपर नीचे नहीं आ सकती क्या? भाई वी आर एज्यूमिंग दैट पुली इज वेरी स्मॉल. अरे भाई ये प्रॉब्लम अभी किया अभी आपने वो इसमें समझ आपने. गया सर, हाँ ये तो समझ गया. हाँ फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप भूल जाओ. इसको मैं पूरा ऊपर नहीं उठा सकता हूं. मेरे उंगली पर दो तरफ रोप रख दो, ऐसे करके ऊपर नहीं ले जा सकता हूं. अगर इस पर मास होगा तो इसका भी इक्वेशन लिखोगे, m1g माइनस m1a इज इक्वल टू दिस थिंग. और क्या? बस वही पूछना था सर. तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर इसका मास होगा, अब ये है कि अब ये खुद रोटेट कर रहा है या नहीं, वो एक अलग बात हो जाएगी. अगर इसका मास होगा तो भी वो भी लिखोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? Now suppose come to this problem and let's try to come this one. सर हाँ सर आपने अभी ये स्टेटमेंट दिया था इट वाज a1 plus a2 by 2, उसके बाद जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसे प्लीज रिपीट कर देंगे. क्या बोल रहा हो? We were not मतलब audible. समझा नहीं. सर आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना a0 equals to a1 plus a2 by 2, तो इसके बाद आपने कहा ना इसे रिप्लेस कर सकते, वो उस समय आप मेरे ऑडिबल नहीं थे. वो एक आपके बार please पास explain कर देंगे. 3 वेरिएबल हो जाएंगे ना, एक t, a1 और a2 है ना. यस सर. a नॉट गिवन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. a नॉट गिवन है, तो इससे आप एक a1 और a2 के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो ना. यस सर. तो फिर 3 इक्वेशन हो गया. जैसे लास्ट वाले में आपने लिखा था ना, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a1 m1 a1
m2g minus t is equal to m2a2, वहां पर आपने लिखा था ना a1 is equal to minus a2. Are you getting my point? Yes, sir. अब फिर से सेम इक्वेशन लिखोगे और यहां पर आप क्या रिप्लेस करोगे? a2 is equal to 2a0 minus a1. A1. बात तो बराबर सेम ही है ना? Yes, sir. फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएगा. यस? Yes, sir. Yes, सो sir. यहां पर आप बिकॉज ए नॉट इज गिवन, ये चीज समझ में रखो. दिस इज गिवन. अरे ये नहीं गिवन रहेगा तो अपने आप थोड़ी ऊपर जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, ओके. सर हाँ यहाँ ए नॉट एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है, तो हाँ हम जी. जब ये इक्वेशन लिख रहे थे ना इसके पहले m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 a1, हाँ तब आप दोनों फोर्स ले रहे थे, तो अब ऊपर जा रहा है तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा क्या इक्वेशन में? आप कैसा इफेक्ट चाहती हैं पहले ये तो बताओ. यहाँ तो इफेक्ट तो हो रहा है, तो कुछ तो उसका अरे कॉस्ट. क्या इफेक्ट चाहती हो ये तो बताओ. सर ऊपर जा रहा है तो फोर्स उसका कुछ ऐड नहीं होगा क्या जब हम? अरे तो ये क्या करेगा? ये तो है ना, जब ए नॉट 0 था तो a2 इक्वल टू माइनस a1 था. ये जब आ जाएगा तो इसका कुछ इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है? ओके ओके. हाँ, ए नॉट का इफेक्ट ही तो है ये, और क्या है? पहले वाले में ए नॉट की वैल्यू 0 थी, यस अभी ए नॉट की वैल्यू कुछ ए नॉट है, तो उसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है तुम्हें? क्लियर है सर. मैं इसमें सोच रही थी इक्वेशन में स्पेशल. अरे सोचना नहीं है, करना होता है. आप सोचते ज्यादा हो. मैथमेटिक्स के थ्रू करने की कोशिश करो. सर ठीक है, सोच करके इस प्रॉब्लम को सोच करके दिखा दो मुझे. चलो इसको तो सोच भी लेना, इसको जरा सोच के दिखा देना, नहीं सर. है ना? सोचो जरा, अगर सोच पाते हो तो सोच लो. सोच लोगे? नहीं सर, होगा नहीं। नहीं सर. नहीं सोच लो एक बार जरा. नहीं सर. नहीं सोचो बैठ करके. अब सोचो कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है. सोच लोगे? नहीं सर. एग्जैक्टली. तो ये प्रॉब्लम, ये जो मेथड है वो इसलिए है कि सोचना नहीं पड़े. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. और आप उस पर ध्यान देने के बजाय आप सोचने पर ध्यान दे रहे हो. सोच करके मैकेनिक्स नहीं बन सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू डेवलप मेथोडोलॉजी. मैकेनिक्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसको मेथोडोलॉजी के थ्रू किया जाता है, एक्सपीरियंस के थ्रू किया जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, अब सपोज m1 हैज एक्सेलरेशन a1. अब कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है आई डोंट नो. a2 हैज एक्सेलरेशन, m2 हैज एक्सेलरेशन a2, m3 हैज एक्सेलरेशन a3, m4 हैज एक्सेलरेशन a4. व्हाट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन a1, a2, a3 एंड a4? ये मेरा क्वेश्चन है. व्हाट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन a1, a2, a3 एंड a4? हाउ यू विल प्रोसीड इट? नाउ लुक एट हियर. Suppose this pulley is moving, this whole system is moving with acceleration a0 downward, then this whole system will moving with acceleration up with a0. पहले वाले इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से ये दोनों पुली को देखो, दिस वन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये नीचे जा रहा होगा a0 से तो ये ऊपर जा रहा होगा a0 से. फर्स्ट एडवुड मशीन. हाँ सर। Agreed? यस सर। Yes. So what will happen? a0 is equal to a1 plus a2 by 2. इस वाले प्रॉब्लम से. Yes sir. Yes? Yes sir. And then इस वाले लिफ्ट का अगर इसको a0 कहते हो तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस a0 is equal to a3 plus a4 by 2. Agreed or not? यस सर। Yes. So if you will add it, then what will happen? a1 plus a2 plus a3 plus a4 is equal to 0. So that will be your relationship between a1, a2, a3 and a4.
तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा, यू कैन इजिली सॉल्व इट। ठीक है, यस सर। है ना? और बताओ इस चारों का टेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा, है ना? नो सर, दो टेंशन सेम होंगी। अरे दादा, इस पर टेंशन है टी, इस पर भी तो टेंशन टी ही है, इजंट इट? तो ये टी इन दोनों को बैलेंस करेगा, ये टी इन दोनों को बैलेंस करेगा, तो सब पर टेंशन सेम ही होगा ना? क्योंकि डिस्क मासलेस है। डिस्क मासलेस है, अभी कोई भी मास डिस्क का मास नहीं ले रहे हैं, बार बार सेम क्वेश्चन मत पूछो। No, so all the tensions will be same. All the tension will be same. What will be tension on this one? If it has tension T, it has tension T. What will be tension on this one? T by 2. T by 2. This one? T by 2. This one? T by 2. This one? T T by by 2. 2. sir. So you can easily solve the problem. हो जाएगा solve? और इसमें मैंने कुछ भी नहीं assume किया, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन क्या क्या हो रहा है। नो भाई, मैं इतना विजुलाइज ही नहीं कर सकता हूं। आई ओनली बिलीव ऑन द मेथोडोलॉजी, क्या मेथोडोलॉजी से चीजों को किया जा सकता है। सो एक होमवर्क दूं, करोगे उसे? हाँ सर। यस सर। Yes sir. करके पोस्ट करना अभी, है ना? Okay sir. ओके सर। Sir, हाँ बोलो। sir, mechanics module, sir didn't send a whole portion. No, mechanics model he has uploaded. Only two It was- topics only there, sir, not total topics. So just Whole topic. go for this topic na first. Okay. Why you are going for the future? Do you know what will happen to the future? Nobody knows. Sir, but we have missed conservation laws kit chapter also. We don't You- have module for conservation laws, which you have done previously. At first, you had done conservation law. Right now you have this particular module, Newton's law. You get it? Only Yes, this sir. chapter we Got have. it, sir. Okay, don't worry. He will give you every model within a 1 or 2 days. I have deliberately tell them that first give them Newton's law module. Okay? Okay, so we thought we don't- maybe sir, sir had misunderstood and only sent one chapter. No. He will send all the chapter. Don't worry. Within a 2 day, he will send all the chapter. Okay? Okay, sir. Thank you. So right now, I think you got the Newton's law. Yes, sir. Okay. So then revise it Newton's law. Okay? Okay, sir. Thank Okay. you. Don't worry. सर हाँ सर ये जो हमने अभी सिंपल प्रॉब्लम करी थी ए नॉट से जो ऊपर जा रहा है उसमें हाँ। आपने ई नॉट इक्वल टू ए1 प्लस ए2/2 लिखा पर ए बिल्कुल। नॉट ऊपर को है हाँ एंड सर दूसरे वाले क्वेश्चन में ए3 एंड ए4 की केस में ए नॉट ऊपर को है तो प्लस नहीं, प्लस का साइन नहीं आएगा इक्वेशन में। अरे ऊपर को प्लस, तुमको जिसको मन मर्जी उसको प्लस कर लो ना। ओके तो ए कोई दादा, ये दोनों अगर इसको प्लस कहते हैं तो इसको नेगेटिव कहेंगे। ओके ओके क्या दादा, क्या कर रहे हो तुम? ओके सर। ओके, प्लस का माइनस है एक दूसरे का अपोजिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर हाँ, तो वो तो कर ही दिया ना, यस सर है ना? डोंट वरी। +2 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया ना आपको? पढ़ाया था सर लेकिन इतना अच्छा नहीं। कुछ पढ़ा ही नहीं तो अच्छा खराब क्या होता है? ठीक है, चलो। So let's try to go for one particular question that is also in your booklet also. So just a minute. चलो, बुकलेट से देखना मत, खुद करना, ठीक है? अब सौबिक पहले देख लेगा, फिर फटाफट आंसर मारेगा तुरंत, तभी खत्म भी नहीं होगा, तो है ना सौबिक? नहीं सर, अभी खुद से ट्राई कर रहा हूँ सर। खुद से ट्राई करना, जल्दी मत करना, सही करना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। दिस इज M1, दिस इज M2, ओके? एंड ऑल पुलीज आर मासलेस, ओके? डोंट वरी, मास वाला भी करवाऊंगा, ठीक है? बट अभी मासलेस कर लो। So this is M1 and M2. What will be relationship between? And you can assume this length is H or L.
कुछ आप ले सकते हो चाहो तो। दिस लेंथ इज h, ठीक है, नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। एनीवे, एंड दिस इज वेरी स्मॉल, सो इट हैज नॉट एनी सिग्निफिकेंस। सो व्हाट विल बी, इसका एक्सेलरेशन अगर a1 है, इसका एक्सेलरेशन अगर a2 है, व्हाट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन a1 एंड a2। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, करके रखना, ठीक है। अच्छा हो तो दोनों का एक एक्सेलरेशन निकालो, m1 और m2, और g के टर्म में टेंशन निकालो, कितना टेंशन लग रहा है। ओके, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, ओके सर। ठीक है। सो एक बार इसे सॉल्व करो अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक नेक्स्ट सम प्रॉब्लम, अब जो सारे को मिला करके प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स में प्रॉब्लम ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। सो ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Okay, thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।